यही था कि हमें पहले ही था, हमारे पास लेफ्ट रेडर एक सरदार था, ओनली परफेक्ट लेफ्ट रेडर नहीं था। अभी रोहित के आने से हमारे को बहुत फायदा मिल रहा है और वो हमारा टीम का लीड रेडर बन गया। अच्छा रेडर है, वो हाइट भी अच्छी है और उसकी स्किल अच्छी है। नया रेडर है और अच्छा करेगा वो, हमें पूरा विश्वास है इस मैच में भी वो अच्छा खेलेगा। हर्षित, आई थिंक आप भिड़ेंगे एक अच्छे से लेफ्ट रेडर के विरुद्ध जो सुंदर विश्वकंडन होंगे, तो अनुज सैनी के खिलाफ वो जा रहे होंगे राइट कॉर्नर में। चलो कॉर्नर में तो कुछ बात ही नहीं है, सब दोनों लोकेश गोसले और अनुज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कवर्स का आपका क्या अभी मंजीत का या फिर किस पे ऊपर भरोसा है? क्या चल रहा है आपके मन में? कवर्स में थोड़े से आप पीछे हो। नहीं सर, कवर की अभी कोई दिक्कत नहीं है, मंजीत आ गया हमारा फिट होके मंजीत। कॉन्फिडेंस नवीन, हम पूरा हमारी कोशिश है कि हम उनके लेफ्ट रेडर को रोकेंगे और जीतेंगे सर। नवीन आई लाइक द कॉन्फिडेंस। जाने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा पूरन साहब आपसे कि कल हमें नजर आया आपके पास दो रेडर्स के साथ आप मैदान पे उतरे थे। जरूर हालांकि आपको मंजीत की आवश्यकता नहीं पड़ी थी रेड में, बट आज भी क्या सेम फॉर्मेशन के साथ आप जाने वाले हैं? क्योंकि नीलगिरी का डिफेंस अमूमन चंबल के बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या वो दो रेडर्स आपके लिए पूरा काम कर पाएंगे? सर सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, और बाकी हमारे को पास यदि जरूरत पड़े तो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन में दो अच्छे रेडर हैं, रिचपाल भी है, सरदार भी है, अच्छा कर रहे हैं वो भी, हमें जरूरत पड़ेगी तो। और मंजीत भी है, लास्ट टाइम अपने अनुज भी रेड मार लेता है उसका भी हमें कोई टेंशन नहीं है, तो रेडर की हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा फोकस डिफेंस पे है। तो ऑल आउट से बचाने के लिए अनुज भी है, जो चिंता नहीं है। आप ऑल आउट के मुकाम पर ना जाए ये हम आशा करते हैं, लेकिन अगर चले भी गए तो अनुज है बचाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जीत कर फाइनल्स में मिलेंगे शायद। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जी हाँ नवीन, तो आई लाइक द मोस्ट की चंबल चैलेंजर्स कोच में जो आज हम मिस कर रहे थे सुबह, वो कॉन्फिडेंस वो आज पूरन शेखावत में नजर आया और बहुत ही अच्छा कार्य के साथ इन्होंने बताया कि इनकी पूरी टीम तैयार है कॉन्कर करने के लिए नीलगिरी नाइट्स को, बट उतना आसान नहीं होने वाला नवीन। एक हरकुलन टास्क वहां पर होने वाला है और कहते हैं ना कि ना चाची का ना ताई का, नीलगिरी नाइट्स का डंका बजता है एलिमिनेटर्स में, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नीलगिरी नाइट्स नजर आ रहे हैं। और पिछला मैच भी चंबल को हरा कर आए एस मरीमुत्तु सेल्वम, पिछले मैच में सुपर 10। Superb. He's been consecutively getting those Super 10s and Best Raider awards. I think we will go out and watch his, raiding skills and how he goes out there and gets the points. Because today it's very, very important. As I said, he is going to be against Lokesh Gosalia, and that right cover. That is what I wanted to ask with Puran, where he is looking very confident. Manjeet's back is good. Manjeet, of course, will be in the left cover position, and he will be waiting against Sundar Vishwakandan. But do not forget, Marimuthu Selvam is always there to support Sundar Vishwakandan. And also, you might even see Vasant. You might even see Vasant coming back. He is almost getting better with his fever, so he's almost ready. He might also come back when it's needed. जी हाँ, निश्चित तौर पर तो एक बहुत अच्छा रेडिंग का कॉम्बिनेशन, जैसा पूरन साहब ने कहा कि उनके पास सब्स्टिट्यूट्स में बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो नीलगिरी काई के पास भी वहां पर लगातार बहुत अच्छे खिलाड़ियों की खदान नजर आती है। बट खदान की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने डिफेंस में अपनी टीम के साथ एकत्रित होकर बहुत सारे टैकल पॉइंट प्राप्त किए और जो जज्बेदार खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मणिकंदन निसामनी है। 7 टैकल पॉइंट से, पर उनकी टैकल सक्सेस रेट सच में इंप्रोवाइज हो रही है लगातार 42%, जो एक बहुत ही अच्छा क्रम है नवीन। Yeah, totally. Again, very quickly, if we see what he's done, look at that right cover. He goes out there and makes sure he goes in the chain. This was Durgesh's classic example. When the cover defenders stand in the chain instead of a raider, then that is a very, very big innovation Nilgiri Knights have brought in. I should really appreciate them for that, because it is not there in their regular style of play. Because every time in any district of Tamil Nadu, you will not find cover defender standing in the chain, Arshit. It's always going to be the raider and the cover defender standing, and they'll leave out one raider away. Yeah. That has been their technique. And today, if Nilgiri Knights have seen it and learnt it and innovated it and implemented it in their way of strategy, that's a hats off for them. So again, he's going to be against Gopal Singh, and if not, even Richpal Jat might come in. Well, we'll see how the dashes happen as well. जी हाँ नवीन, और अब एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ही इज ऑन फ्लीक, प्रॉपर एम्बिशन के साथ आते हैं, प्रॉपर अपनी पूरी एस्पिरेशंस के साथ वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और मुझे लगता है नवीन, आपने किसी और से ज्यादा बात की ना की हो, पिछले 2-3 दिन में इनसे सबसे ज्यादा बात की होगी आपने, क्योंकि हर बार है वहाँ पे, हर बार उनसे बात कर रही हैं। आइए राजाराम, तो द कोच ऑफ नीलगिरी नाइट्स इज हियर. फर्स्ट காலையில ஜெயிச்ச பிறகு போயிட்டு நல்ல ஒரு தூக்கத்தை போட்டீங்களா இல்லையா? What I'm asking is, did you guys go back and take better rest? Did you have a small little nap that is very much needed? சேமா சார், எல்லாம் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் நெக்ஸ்ட் மேட்சும் பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்காங்க. அருமை. அப்புறம் வேற ரேடர்ஸ் பத்தி நான் புரண்ட கேட்டேன், உங்க எதிராளி கோச் இன்னைக்கு. ஸோ நீங்க வந்து அந்த லெஃப்ட் ரேடர் ரோஹித் யாதவ் அவரை தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும். ஸோ சந்தோஷ் ஸ்ரீனிவாசன் எவ்வளோ தயாரா இருக்காரு ரைட் கார்னர்ல? ஏன்னா நாங்க என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, சந்தோஷை வந்து ஒரு ரேடர் ரன்னிங் ஹேண்ட் டச் அடிக்கிற நேரத்தில் தான் அவர் பின்னாடி போற நேரத்தில் அவர் டச் வாங்குறாரு. ஸோ இல்லைன்னா அவரு போய் அட்டாக் பண்ற நேரத்தில் அருமையா வந்து விழுந்து பிடிக்கிறாரு. அடி
இல்லையா உனக்கு வருதா எனக்கு வந்து மேலே ஏறிடு ஆனால் லைனில் பக் லைனை கீழே வச்சு அடிக்காதே காரணம் ஒன்று அடிக்காது மேலே வந்து அடிச்சுக்கணும் நீ ஹோல்டு தை ஹோல்டு பண்ணுறது மேலே வந்து அடிச்சு அதே சமயத்தில் கவரை தொட்டா மட்டும் நீ போறோம் எலிமினேட்டர் நம்பர் 4. இப்போ இந்த ஒரு கடைசி கட்டத்துல செமி ஃபைனல்ஸ்ல நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு ரேடர்ஸ் காலையில விளையாடின ரேடர்ஸ் தானா அந்த தெம்போட தான் இருக்காங்களா? நம்ம வந்து சுந்தர விஸ்வகண்ணனை பார்ப்போம், அப்புறம் இந்த பக்கம் மாரியா பார்ப்போம். மூணாவது ரேடரா யார் வராரு உள்ள? ஹரிஷ் வராரு. ஸோ வசந்த் கூட தயாரா இருக்காரா? எப்படி இப்போ தேவைப்பட்டா உள்ள வரதுக்கு தயாரா இருக்காரா? ப்ரிப்பேராக இருக்காரு சார். தேவைப்பட்டா ஏன்னா இன்னைக்கு பிளான் வந்து 2 லெஃப்ட் ரைடு ஒரு ரைட் ரைடு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அவர் தேவைப்பட்டா கண்டிப்பாக உள்ள வாழ்த்துக்கள், நலம் உண்டாகட்டும். நீங்க ஜெயிச்சா நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் சந்திப்போம். Nandri, Nandri. So yeah, they're all set, they're all ready. I think we should also be ready now to run into the commentary box. जी हाँ, तो चलिए दोनों ही टीमें तैयार हैं और एम्फेसाइज करेंगे कहीं ना कहीं अपने टेनिशियस टैकल पॉइंट्स पर उतने ही इंपॉर्टेंट होगी आज के रेड पॉइंट्स, क्योंकि नवीन कह चुके हैं हम दोनों ऑलरेडी वहां पर तैयार हैं पूरी तरह से। बहुत ही कुछ बेहतरीन कार्य के साथ ही एलिमिनेटर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। कौन करता है किसके किले को ध्वस्त, आइए इस मुकाबले के दौरान जानेंगे। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. Thank you so much everybody for making this Yuva Kabaddi series on the summer edition safe and clean as well, as we are going into the eliminator number 4. Is it going to be Periyar Panthers against the Palani Tuskers tomorrow, or is it going to be the Nilgiri Knights against the Palani Tuskers tomorrow? This 40 minutes will answer us. As Harshit, can we have both the teams on the mat please? बामुलाइजा होशियार तशरीफ ला रहे हैं चंबल चैलेंजर्स के किले को ध्वस्त करके राजस्थानी रजवाड़े। आइए तालियों के अभिवादन के साथ करते हैं उनका सुस्वागत हम। तो जोरदार हो जाए हुकार पेरियार पैंथर्स। Their coach Puran Shekhawat told that yesterday also they were sitting out there and strategizing. They did not go out to get some fresh air. So they are totally focused as they want to conquer this eliminator and go to the finals. अब इस कबड्डी के मैट पर तशरीफ लाएंगे the proper mixture of offense and defense। नीलगिरी से सशक्तिकरण पहचाने आ रहे हैं नीलगिरी नाइट्स। Wonderful to see the Nilgiri Knights actually run in here by eliminating 3 teams. Not easy when you finish at the bottom of the challenger round and then go out there and all the matches play it as a knockout match, and that is what they have done. They have eliminated the Chola Virans, they have eliminated the Arab Liaros, and today in the morning they eliminated the Chambal Challengers. So Nilgiri Knights for the very first time in this summer edition, they are making their debut and they are also playing the second match of the day for them the very first time. So they are all pumped up. Rajaram, as always, has very clear plans against this starting 7, as Lokesh Gosalia and Anuj Seni will be in the corners, trusted corners, as Gopal Singh and also Rohit Yadav, and then in the middle we have Monu Prasad, right? So Gopal Singh and Rohit Yadav, only 2 Raiders format from Puran Shekhawat. That's a nice intro, as Manjeet Mitra and Rahul Chaudhary will be in the covers. I think Manjeet Mitra will be used as a raider as well when needed. Kanaram Chaudhary can come in, Nakul Seni can come in and raid, Richpal Jat can come in and raid, Sardar Chaudhary can come in and raid, and Mukesh Chaudhary is that lone defender in the substitution lines. Harshit, all the raiders have been rested.
two-raider format strategy. I think everybody is following the footsteps of the Palani Tuskers. जी हाँ, पिछले मैच में ही करके दिखलाया था पेरियार पैंथर्स ने बहुत अच्छी तरह से, बट क्या वो काउंटर अटैक के साथ ये नीलगिरी नाइट्स तैयार रहेगी? क्योंकि कहते हैं ना कि सितारों के आगे उस जहां में कुछ फरिश्ते रहते हैं, और ये टीम उन फरिश्तों की तरह उभर कर आई है अपनी टीम के लिए, और एलिमिनेटर्स में लगातार अच्छा किया है एस्परिमोतो सेल्वम, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां पर पिछले मैच में करके दिखलाया है। दोनों मणिकंदन दोनों कवर्स को संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सुंदर विश्वकन्नन जब से आए हैं टीम में, अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करने का पूरा डंका इन्होंने बजवाया कि हरीश वहां पर होंगे। द परफेक्ट रीडिंग ट्रायो यहां पर नजर आने वाला है, और एस संतोष श्रीनिवासन नवीन मुझे वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही वैल्यूएबल डिफेंडर नजर आते हैं जब मैं राइट कॉर्नर पर बात करता हूं। लेफ्ट कॉर्नर पर विलिवन वहां पर होंगे, एस अभी कुमार, वसंत, जॉर्ज विविन, एलू मलई और अरविंद राज। तो वसंत मुर्गन हमें नजर आ रहे हैं नवीन। Yeah, totally. As Vasant is always there to go out there and support whenever is needed in the substitution lines. But it is so very interesting to actually go out there and mention what we will want to see for the very first time. Gagan Gowda has been pushed down from the top slot as Durgesh Kumar becomes the top raider of the summer edition. 274 raid points, and I think somewhere around 28 tackle points, if I'm not wrong. He would have got that as well as the most valuable player of this series, as Sanskar Naveen Mishra. It's a disappointing end for Sanskar as Chambal Challengers have been eliminated today in the morning. जी हाँ नवीन, अगर आपने टॉप 3 रीडर्स की बात की, अब टॉप 3 डिफेंडर्स की हम बात करते हैं। इनके बारे में हमने बहुत सारी वार्तालाप की ना। लोकेश गोसलिया 29 मुकाबले खेले, 93 टैकल पॉइंट्स है, और बहुत ही कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, और बहुत ही अच्छे कप्तान के तौर पर है। अंकित जाट में यहाँ पर हमारा साथ जा चुके हैं राजेंद्र बाकर ने काफी समय पहले। नवीन, अगर आप देखिए थर्ड प्लेस में जो डिफेंडर है और पहले पायदान पर जो डिफेंडर है, उनके बीच में अंतर 33 पॉइंट्स का है, और 33 रेड पॉइंट्स हमें समझ आता है, 33 टैकल पॉइंट्स नवीन। Exactly, and no other defender has come in and taken Rajendra Bakar's place. It's been very long time since Rajendra Bakar left the summer edition, as Raki Urf Bobby actually flips the coin over, and the Periyar Panthers won the toss. So the first raid will happen from the Nilgiri Knights, as Marimuthu might be starting it out, but look out for this. Lokesh Gosalia, just 7 more tackle points, and he will be the first man in the Yuva Kabaddi series edition here to go out there and get the 100 tackle points. But Rohit Yadav behind him, 145 raid points. That's a wonderful number to have. And Puran Shekhawat told how he molded Rohit into becoming a premium raider, as a team needed one raider like this who can shoulder all those responsibilities. And with our young shoulders, yeah, Rohit has come out with flying colors. जी और जिस प्रकार से रोहित वहां पर आपको नजर आ रहे थे, यहीं अगर आप नीलगिरी नाइट्स के लिए बात करें, मल्टीपल नेम्स आपको नजर आएंगे, बट आज जिस खिलाड़ी पर शायद सबसे ज्यादा दावेदारी हमारे प्रोड्यूसर मान रहे हैं वो होंगे के हरीश। 19 मुकाबलों में 71 रेड पॉइंट्स है, रेड स्ट्राइक रेट 49 के आसपास है, और ये खिलाड़ी अगर आज प्रॉपर फिटनेस, क्योंकि पिछले मैच में इनकी प्रॉपर फिजिकल फिटनेस हमें नजर आई थी, आज भी अगर वैसा चला तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एक सरप्राइज पैकेज लेकर आ सकते, क्योंकि के हरीश नहीं, ये रॉकेट हरीश है नवीन। Totally, no doubt at all. Even with that little injury on that right knee, he's done well. All these numbers won't matter at all today, as this is the D-Day. This is the penultimate of the D-Day also, because this is the semi-finals. The winner of this will go through to the finals tomorrow and play the Palani Tuskers, as already Palani Tuskers have made it twice to the finals in the Puducherry leg and here as well. Can Lokesh Gosalia achieve 100 tackle points with 2 matches remaining? Okay, Ankita Rajput, hang on, it is 1 match, not 2 match, by the way. If they win today, it is 2 matches. But I am expecting Lokesh Gosalia to get a high five today. I mean, 7 tackle points for him is not a problem at all. I am expecting that he will get a 100 tackle points mark today itself. या मजा आ जाएगा। नीलगिरी नाइट्स जरूरी नहीं चाहेगा, बट हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो बेहतरीन खेल खेले वो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को जीते। और अगर आप बात कहते हैं नीलगिरी नाइट्स की, नवीन इससे पहले लगातार हारे आ रही थी, पर जो पिछली 3 जीत आई है उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गया है इस टीम का। और वो 3 जीत के साथ साथ नवीन जो प्रश्न आर्यन कुमार ने यहाँ पर पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। कैन नीलगिरी नाइट्स बी द फर्स्ट टीम टू प्ले द फाइनल्स, finishing 5th at the challenger round points table? वैसे Periyar Panthers भी थी पिछले समर एडिशन में actually, and we have also seen, you know, Dwarka defenders also come out there and play the finals in the Pune leg as well. Yeah, we will speak about that question more in depth as we go to the countdown and get this eliminator number 4 started.
So the Periyar Panthers had won the toss, and the first trade will happen from Mari Muthuselvam. Akshay Desai gives the go-ahead. And no, K. Harish wants to start. It's not Mari. The captain sends his lieutenant and the left raider first up. Right, so just going back to that question, I'll tell you, it might not be the first team to finish fifth to go out there, but it might definitely be the first team in their inaugural season to be finishing out in the last position of the challenger round and reaching the finals. But that was a nail biting of the tackle. Puran had his heart in the mouth. और नवीन, मुझे अभी से ही नेक टू नेक थ्रिलर और फाइनल वो द एनकाउंटर की यहाँ पर क्रम की आदत आ गई है। और देखिए जिस तरह से सिंगल थाई पर गए, एक बहुत ही अच्छा टैकल, और इसलिए शायद मंजीत मित्र का इंक्लूजन बहुत जरूरी था नवीन पेरियार पैंथर्स के लिए। Yeah, we spoke about that left raider and that left cover combination tackling out very nicely, isn't it, in the pre-show? That is what it is all about. As now Rohit Yadav steps in. First point for the Periyar Panthers, and Velavan does well. Yeah, he actually apologized in the camera in the show yesterday as well, saying he will not be over-aggressive. He apologized to everybody, and I hope he will keep his aggression down. Empty rate to start off for Rohit Yadav. एक अच्छी शुरुआत। और नवीन, मैंने और राधिका ने बहुत ज्यादा चर्चा की इस खिलाड़ी पर। एक चीज हम दोनों ने ऑब्जर्व की कि हर डिफेंडर को प्रॉपर चेक करते हैं खिलाड़ी, और वही एस मरी मुथुसेल्वम यहाँ पर कहते हुए एज ए राइट रीडर हैं लोकेश गुसलिया। कल दुर्गेश के विरुद्ध इनकी प्लानिंग बहुत ही सशक्त थी और बहुत ही क्लियर प्लानिंग के साथ आए थे। आज देखते हैं एस मरी मुथु के विरुद्ध कैसी प्लानिंग होने वाली है। मंजीत मित्र को शायद आज पूरी तरह से आप अग्रेसिव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। See, if he wants to go out and attack like that, let him stand in the right cover. When Mari Muthuselvam comes in, let him shift his positions and go to right cover instead of Rahul Chaudhary being on the right cover. You can't attack from the left cover. As a right raider, you just can't have a proper tackle on the right raider being in that left cover position. So watch out, Manjit. I know aggression is good and it has to be under a little borderlines. No! That's not right. Manikandan Nesamani gives away an easy point to Gopal Singh, and Gopal was not even going for the point. गोपाल सिंह, इनकी जो टर्न्स है नवीन, और मैं अभी नहीं, शायद मुझे पहले से याद है कि एक दो एडिशन पहले मुझे ये खिलाड़ी बहुत ही इंप्रेसिव नजर आया था, और एक और इनकी इंप्रेसिव स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी कह लीजिए वो बहुत ही अद्भुत है। बट सुंदर विश्व on the board in this eliminator number 4. Wonderful anti-blocking skills, and that's what Manjit and Rahul. So if you are over aggressive, that becomes a problem. Harshit, the secret is of Sundar Vishwakannan under those blue shoes that he's wearing, in his left leg, you'll not believe, he's only got 1.5 fingers. In the toes, he's only got a half thumb finger, and I think a little more than half of a little finger. That's all. Overall, it's just 1.25 fingers that he's got. Oh. That is it. And he's coming to raid once again. But the reason I say that is because as a raider, Harshit, and as a left raider, his left leg is so important for all the bonus points and all those ankle holds and everything. Just imagine how much of a dedication he could have put in his Kabaddi game to go out there and become such a wonderful raider. And he's been dashed out now. That's a very, very good dash. He was turning blind, and Monu Prasad being the third or fourth defender is done well. जी हाँ, मोनू प्रसाद जिनकी एक्चुअल पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर है, बट जैसे जैसे इस खिलाड़ी को मौका मिल रहा है ये हर पोजीशन से अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा करें, और बहुत अच्छा फ्रेम चूज किया नवीन। जैसे ही इन्हें मौका मिला तो वो डैश करने के लिए बिल्कुल मिडरिफ पर गए। और क्या बात की नवीन आपने, आज मैंने पेनल्टी मेट डे की शुरुआत की थी तो कहा था कि जो पसीने की स्याही से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और इस सुंदर विश्वकन्नन इतिहास बदल रहा है। ऑलरेडी अपनी हाइट अचीव कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर आर्मी में है, आर्टिलरी मैन आप उन्हें लगातार कहते हैं, और फिर भी इनके पास बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और ये हमेशा नवीन धन्यवाद सबको करते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी स्किल है। यहाँ रोहित यादव चेकिंग ऑल द डिफेंडर, मुझे लगा शायद मिड लाइन को क्रॉस किया। Oh, there Ashita and her gang has come out. Oh, Santosh Srinivasan. And Velavan is not happy with something. The right corner goes out with a proper block. But then Santosh Srinivasan, Velavan tries it first. Anti-cross first, and then the raider is crossing out. So somewhere Nilgiri Knights could have gone for the review. They could have challenged that 2 pointers that was being given away. You know, it's one review per half. So they could have easily challenged that review. Yeah, they did not go for it. Yeah, because see, he's in the artillery's section already and playing Kabaddi. He's been selected with that sort of a little drawback, which he's not shown it as a drawback.
And he's been playing there for like 3 years now. And it's very soon he's having a big hope and big dream of getting selected for the services team as well. So whether you have all the fingers or no fingers, how you play a kabaddi match is what matters. That's what Sundar Vishwakarnan has actually shown to the world. और नवीन बहुत दिनों पहले जब मेरी इनके साथ वार्तालाप हो रही थी, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की थी जो शायद मुझे दिल पर बहुत अच्छी तरह से लगी थी। इन्होंने कहा था कि मैंने मेरे पिताजी से ये सीखा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में कैसे गुजारा जा सकता है और कैसे उसमें भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। तो ये सब्सटेंशियल हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट लाइफ में नवीन एक फंडा होता है ना कि कैसे आप खुश रह सकते हैं, और एक खुश रहना जानता है खिलाड़ी, मॉरल बूस्ट करना जानता है। पर इस बार के हरीश होंगे 6-2 से शुरुआत में पेरियार पैंथर्स ने बढ़त बनाई है। नवीन के हरीश का आज रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोनू प्रसाद की पोजीशन को लुकआउट कीजिएगा। Oh God, he's got 2 points. Lokesh Gosalia. I said his ankle holds are just unbreakable. But I think the only problem was he was too advanced. He was outside the balk line. Yeah, there you go. The defender's borderline is the balk line. You can't tackle anybody. And look at Harish's brilliance of Kabaddi thinking. He kicks Rahul Chaudhary BN before reaching the midline as well. So, Ashit, the start of the Nilgiri Knights' Raiders are good. The defense just needs to settle down. They're, I think, getting over anxious in going out there for all the touch points. Yeah, that's good. The 2 defenders, Sudamani and Nesamani, in the chain is good. They're okay to give the bonus away. And look at Velavan. Look at Velavan. Velavan is coming as a right corner. And then Harish goes for the pursuit. What was actually Harish doing there on the left corner? Right, that was interesting. जी हाँ, वहां पर क्योंकि वेलेवन बाहर चले गए हैं और एस संतोष श्रीनिवासन वहां पर थे। देखते हैं एक बार फिर से कि क्या उनका रिवाइवल हो चुका था। यहाँ मंजीत ने एक बार गलती की थी, बट रोहित यादव ने इस बार टैकल में साथ दिया है। एक बार लग रहा था कि के हरीश को रूट मिल चुका है, वो एस्केप रूट जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। ओ, ये अच्छे दृश्य नहीं है नवीन, हल्का सा शायद नी में निकल आया है के हरीश के। He's got that ligament problem in that left knee. Yeah, Monu Prasad gets it, but then goes out there on the 3rd line of defense. And Rohit Yadav, he says, enough guys, leave me. But on the moment, could not be out there. That's not a nice sign. That's not a really good sign for K. Harish. So Vasant will have to be getting ready very soon. As now Gopal Singh is coming for a do-or-die raid. Where can he go out there and have a touch? No, he says, I've not got Sudalamani. And there's somebody comes across. Wonderful cover. And that combination of Sundar Vishwakarnan for the dash as, see, Vasant Murugan, he's coming in. Vasant Murugan has opened his jacket out. He's got a little more fever as well, but that's okay today. जी हाँ, के हरीश को अगर वहां पर इंजरी हुई है तो के वहां पर आना बेहद जरूरी है इस खिलाड़ी का। बट एक अच्छा टैकल इनिशिएट किया और दोनों कवर्स एक साथ गए नवीन। और जब उन दोनों का ब्रूचुअल फोर्स, ये मुझे हल्क की तरह लगते हैं नवीन। ये दोनों ही जो ही मैन करके पहले जरूर एक कार्टून कैरेक्टर और एक बहुत ही बेहतरीन जिन्हें बहुत एडमायर करते थे, उनकी तरह इनके शोल्डर्स बहुत ही तेज हैं, बहुत ही पावरफुल हैं और दोनों ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं एज अ कवर। एस मरी मधुसेल्वम इस बार लोकेश गुसलिया पर किक के ट्राई करते हुए पिछली बार बहुत अच्छी जंप लगाई थी। नीलगिरी नाइट्स डिफेंस और ऑफेंस दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर के साथ मैट पर उतरता है। Yeah, Nilgiri Knights needs to understand that whatever the errors that has happened is not the Raiders attacking you, it's the defense going and having those advanced tackles. That has been the problem. Now Rohit will not cross the balk line in. He will just play on the balk line raiding front. That's all. See, he's not been drawn inside. And that's a very good strategy there by the defense. They've drawn him inside, they let him go with an empty raid. And now the man. Right, this is what there's so much of a storyline that we were discussing about. And I asked him, you know, Arshit, today when during the lunch break, I asked him, Sundara, is it okay that if we go out there and discuss this as, you know, your artillery team or anybody, will they, you know, find out this thing and they find you? They say, no, everybody knows it. That's fine. Even in the artillery, in my unit, everybody knows I have that a little, you know, fingers missing in my left leg. That's okay. Nobody's bothered as I'm playing well. Anuj Saini comes in. No, I should have tried in this raid because this is going to be the second empty raid for the Periyar Panthers.
जी हाँ, यहाँ पर अनुज सैनी पहले आराम से खड़े हुए वहां पर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे कोच का कॉन्फिडेंस इन्होंने जीता है नवीन, पर जरूर ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ क्योंकि 2 और डायरेक्ट है मरीमुथु सेल्वम के लिए 5 का हाउस है, बोनस जरूर ऑफ होगा। अनुज सैनी लोकेश गोसलिया का परफेक्ट कॉर्नर कॉम्बिनेशन वहां पर आपको नजर आ सकता है। देखते हैं किसकी तरफ जाएंगे। किक लगाई थी पर मैं लोकेश की तारीफ करूंगा, अच्छा बचाया नवीन उन्होंने अपने आप को। Yeah, totally, but that time. Oh no, Lokesh Gosalia. Puran Shekhawat also knows it. If Lokesh Gosalia is having a two-minded affair, this is what happens. First, he does well to go back, and then his left knee. Oh, why didn't he go pounce on Marimuthu Selvam's ankles? And this is testing times now for Rohit Yadav. It's a do-or-die raid, Arshit. I don't see. Oh, look at this. The defense changes, corrections, the angle. No, that's not right. The defenders, both of them should have been in the chain as Vasant Murugan changed it. And then the toe touch. How many times have we said that? If Vasant Murugan was left alone, it would have been nice. Can we have the replay? No, not here. Can we have the replay of Vasant changing the position and standing there? I think EVS Ram will give that to us very soon. नवीन, जिसके बारे में हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसे वो थोड़ी सी डू और डायरेक्ट देखी, एक मणिकंदन जो कि वहां पर मौजूद थे, वो थोड़ा सा वहां पर बाहर गए, वसंत मुरुगन वहां पर आए और तुरंत रोहित ने वहां पर देखा और टो टच वहां पर किया। आप सुंदर विश्वकर्णन वहां पर होंगे, 5 का हाउस है। क्या एक शानदार टच वहां पर किया है था मंजीत पर, एक बहुत ही अच्छा कार्य है। मंजीत इस बार गए थे दोनों थाइस के लिए अच्छे डैश करने के लिए, बट सुंदर विश्वकर्णन ने अपनी लॉबी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और प्रॉपर एक्सीलरेट किया मिड लाइन को पार करने के लिए। Yeah, Sundar Vishwakarnan has been good. Oh, don't tell me Manjit Mitra, he's injured himself. He's feeling a little not so good. Oh, he's gone and banged in. Sundar Vishwakarnan's rib cage is already having a little bit of a concussion. Right, Rohit Yadav so brilliant in his previous raid. Now Vasant Murugan, of course, is standing in a proper raider's position in that left-in position. He wants to go for the diving touch on the covers. If nothing happens here, we will go back to see in the previous raid of that do-or-die raid for Rohit Yadav. And just before the toe touch happened, Vasant Murugan changed his position and went to the hands. Now look at this. Look at that. No, Nesamani. I did not like what you did. And immediately after that, look Rohit what he did. He just did not even try anything. And he just goes boom on the toe touch. जी हाँ, यही फर्क पड़ता है और मैं तारीफ करूंगा इसमें रोहित यादव की भी की, जिस तरह से उन्होंने तुरंत देखा, एक्सेलरेट किया, क्या लॉबी में चले गए थे। जरूर अक्षय देसाई वहां पर बना करते हुए और महाराष्ट्र के अक्षय देसाई वहां पर रेफरी मौजूद है। और रेफरीज की भी हम बात करते हैं नवीन, तो वहां पर पूरे भारत से यहाँ पर आपको रेफरीज नजर आते हैं, हर एक स्टेट वहां पर कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पर वही दोनों आपको नजर आ रहे हैं, सुंदर विश्वकर्णन मिडल में है, दोनों मणिकंदन की वहां पर क्रम रहने वाला है और अनुज सैनी सिर्फ डिफेंस को टेस्ट करते हुए शायद वापस चले जाएंगे। If Sundar Vishwakarnan would have stood on that cover position, holding Nesamani's hands, it would have been wrong. Oh my God, that was such a good move, I should say. Sundar Vishwakarnan, your job is to raid. You keep on raiding. Forget Nesamani and Sundaramani. Leave them alone. Running attack on Monu Prasad. He is just an unstoppable artillery weapon that's coming towards you when he charges like that. जी आपने अस्त्रों का प्रॉपर सही समय पर उपयोग करना, ये किसी भी आर्मी के व्यक्तित्व के लिए बेहद जरूरी होता है। और इनका सबसे बड़ा वेपन, इनका अस्त्र, इनके हैंड टचेस हैं और बहुत ही बढ़िया बड़ी आसानी के साथ नवीन, हमने जयसूर्य नागराजन को देखा है, हमने सुंदर विश्वकर्णन को देखा है कि बहुत ही इजीली हैंड टच करते हैं 4 या 5 के हाउस में भी। बट यहाँ रोहित यादव की एक बार फिर से महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा होने वाली है। पेरियार पैंथर्स को क्या एक रिवाइवल दिला पाएंगे? डू और डायरेक्ट है, शायद संतोष श्रीनिवासन ने बोनस देने का मौका दिया है, रोहित यादव फिर से शायद ट्राई ऑन करेंगे। I think that will be the strategy. Give him the bonus and don't give him the touch point because they are losing men out there. And when Rohit goes back, it's going to be a super tackle situation. That is what the idea is all about. Raider out. Raider out. No bonus point. Oh, Rohit Yadav. The bonus was given to you. Can the Periyar Panthers challenge this? Yes, they should. It's 1 review per half. They really should go out there and challenge it. Bonus was not given. And Raki will just confirm us the same thing. Please go back. TV umpire, Periyar Panthers challenge is bonus point. Our decision, no bonus point. Please review. Arshit, he had, I think, 3 or 4 attempts. Yeah. Did you find anything convincing? Not this. Definitely not this attempt for sure. I think he's just cutting the bonus line on the outer half.
looked very confident with that. He looked very confident with that. जी हाँ नवीन, वहां पर अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आए थे अपनी टीम से। उसके पश्चात पूछ रहा था, अनुज सैनी ने कहा कि जाइए रिव्यू की मांग कीजिए, क्योंकि वहां पर वन अनसक्सेसफुल रिव्यू पर हाफ वहां पर होता है। और राखी कुमारी की वहां पर आवाज में हमें सुनाई दिया टीवी रेफरी तक, उनका निर्णय अभी भी आना शेष है। बट नवीन, नेक टू नेक मैच की शुरुआत है, 8-8 बराबरी पर स्कोर है। और किसी ने शायद प्रेडिक्ट भी किया था नवीन की 12, 13, 15 इसी के आसपास पहले हाफ की शुरुआत में हम ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं। Totally, so no doubt at all, because the first half is going to be a little tighter, and then the real fight will happen in the next 20 minutes. But yes, until Rambir Singh has the time to see in all the angles, I think we will also go out there and speak about the referees, as we always do. You know, they are also having a nice day out where, you know, they visited the KRS dam, where of course Sagar Panchal's shirt got tore, and he immediately on the second day he immediately wore a new shirt. How many new shirts he's got from Mumbai? लेकिन अभी पिछले 4 एडिशन से मैं उन्हें देख रहा हूँ। और उनकी वाइफ जब बीच में आई थी, उन्होंने एक बात मुझे बताई थी, वह पहले इस बोनस को एक बार चेक करते हैं फिर से कि क्या ये बोनस किस अंदाज में वहां पर रहेगा। निर्णय आना अभी भी शेष बचा है नवीन, बट हर बार वो नए एडिशन में आने से पहले सागर पंचाल 10 नए शर्ट्स खरीदते हैं और वो उनकी वाइफ सिलेक्ट करती है कि कौन कौन से शर्ट वो लेकर जाने वाले हैं। For every series, 10 shirts. Review unsuccessful, no bonus. Read it out. 1 point. Review unsuccessful. Captain, no more. Right, this is not what the Periyar Panthers expected. Unbelievable. And no bonus is what has been decided by Rambir Singh, so that is what it stays like. Rohit, now it's a big learning for him. In a do or die rate, don't have to be too confident on a bonus point. And Lokesh Gosalia has been out for a very, very long time. And this is the first time it's going to be a one-man standing show again. It's going to be Anuj Saini. Oh, error from Rahul Chaudhary. But don't bother. Anuj Saini is here to go out there and get some touch points. जी, अनुज सैनी वहां पर इकलौते खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे जो खड़े होंगे, बट एक खराब एरर वहां पर देखिए। राहुल चौधरी बीएन दोनों एंकल्स पर शुरुआत में जाने का प्रयास किया। हालांकि सुपर टैकल्स में पेरियार पैंथर्स के मैक्सिमम नंबर्स आपको नजर आएंगे, बट यहां पर उनसे एक चूक हुई। राहुल चौधरी और लोकेश गुस्सेले के बाहर जाने का ये फर्क होता है नवीन। लोकेश जब बाहर बात जाते हैं हमेशा उनकी टीम थोड़ा सा परेशानी का सबब प्राप्त करती है। यहां अनुज सैनी नवीन देखते कि क्या कवर पर टच कर पाएंगे। अच्छा प्रयास था जरूर, लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ भागेंगे, डिफेंस को अनसेटल करने का प्रयास करेंगे। विल क्या एक एंकल होल्ड के लिए जा सकते हैं? I think the defense will stand back. It'll just be faking the bonuses, and as the dash come in, hang on, Mohan Gowda and Akshay Desai will have a discussion. Now, first of all, before the dash, Harshit, I want to know if there was a touch point. Why did the dash come in? I did not understand why the dash had to come in. And once again, Anuj Saini is trying to create the magic what he created against the Humpy Heroes. Sagar Panchal immediately comes in. And Manigandan Sudalamani actually looks very, very confident, saying, yes, I have gotten the dash from that left cover. Yeah, I think there was a toe touch on Harish first, and then the dash came in. So maybe that is why, you know, somehow Sudalamani went in for the dash. जी, और ये मुकाबला बिल्कुल जिस प्रकार से नेल बाइट कर रही है यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची, वैसे ही मुकाबला होने वाला है। और पीछे आप अरविंद को पर्पल जर्सी में बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हुए नजर आ रहे हैं धन्या को। और अरविंद जी का एक और नया मैं आपको टैलेंट बताता हूँ नवीन, कि ही इज ऑल्सो नेशनल स्विमर। आज हम जब एक साथ स्विमिंग करने गए थे, उन्होंने संग्राम के साथ रेस लगाई। शुरुआत में संग्राम ने लीड प्राप्त की, बट उसके पश्चात उन्होंने जीता था सभी का दिल। जैसे ही अनुज आज एक बार फिर से दिल जीतते हुए आए हैं, और मुझे नहीं लगेगा कि नीलगिरी नाइट्स रिव्यू नहीं जाने देगा, बिल्कुल लेकर जाएगा रिव्यू। Totally, they will want to check this. What is your challenge? Raider out. Mari says the Raider is out. TV umpire. Nilgiri Knights challenge is Raider out. Our decision, Raider saved 2 points. Please review. Slow down, Rocky, slow down. The train is still not come to the Mysuru platform. How quickly she said that. She's more quicker than any commentator, but yeah. Now, first of all, is there a hand touch here? That is what they will see. If there is a hand touch, then Anuj Saini going to the lobby makes sense. Anuj not a very tall raider. I think there is a gap between Sundar Vishwakandan and Anuj Saini's hands, and he's first gone into the lobby. First of all, and even the dash is completely outside the lobby and reaching it. So first of all, I will want to see if there was a hand touch on Sundar Vishwakandan.
That is the big factor. Now we'll have to completely hear it. If Raki says review, successful, unsuccessful, whatever, is it raider out or is it raider out of bomb? Yeah. Yeah, we want to clearly hear that. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, क्योंकि वहां पर पहले एक टच था सुंदर विश्वकर्णन पर, या था या नहीं था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट 10-8 का स्कोर और इकलौते खिलाड़ी बचे अनुज सैनी पेरियार पैंथर्स के लिए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर रिव्यू लिया गया है नीलगिरी नाइट्स की तरफ से। देखते हैं किसके पक्ष में हो जाएगा। राखी कुमारी और हमारे तमाम लाखों करोड़ों दर्शक फैन कोर्ट पर शायद इसका इंतजार कर रहे हैं। बट पेरियार पैंथर्स ने नीलगिरी नाइट्स से बहुत अच्छी वापसी की। एक बार लग रहा था 6-2 का शायद स्कोर था, उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट पेरियार पैंथर्स को दिए और नीलगिरी नाइट्स ने 8 पॉइंट लगातार और निरंतरता के साथ प्राप्त किए हैं। Raiders save 2 points. Periyar Panthers. Raiders Captain, save 2 no more points. reviews. Right. That is what the decision is. So that means there was a hand touch on Sundar Vishwakandan. So that is what it looks like. Yeah, there was a jersey touch maybe. And the dash, I think, was been through the lobby, whatever. So that is what the discussion is. Right, so going ahead on a super tackle situation. Lokesh Gosalia has come in. And the moment he's coming from the bench, he's gone in for a quick super tackle on the ankle hold on Mari. 2 points. या नवीन, आई लाइक द मोस्ट कि जिस प्रकार से लोकेश ने टैकल किया, उसके बाद अनुज सैनी ने उनके पैट किया, यानी कि पीठ थपथपाई, वो उससे कॉन्फिडेंस बताता है। जरूर अनुज सैनी वहां पर मौजूद थे, गोपाल सिंह मौजूद थे, लोकेश गोसलिया जैसे किक के लिए गए, एसमरी मुत्तु सेल्वम पूरी तरह से टाइम लगा दी। लोकेश गोसलिया का प्रेजेंस फील होना बेहद जरूरी है इस बड़े एलिमिनेटर में। 12-10 नवीन, अगर यहां से पेरियार पैंथर्स पूरी तरह से अंत में जाकर मुकाबला जीता तो मेरे लिए कबड्डी कमाल मोमेंट कहीं ना कहीं अनुज सैनी के 2 पॉइंटर होंगे। When it is on a review, we might not give it off like that, because it might not be that Kabaddi Kamal moment for me, Arshid, because it was going in for a review. It was a little conversational, if not controversial. So, let's leave that moment there. And once again, this is a wonderful double thigh hold. And from being a last man standing, once again they've gone out there, Anuj Seni, and he sent out Vasant Murugan. सुपर सेवी है नवीन, क्या बात है, इकलौते वहां पर मौजूद थे। अब 5 खिलाड़ी को वहां पर खड़ा कर दिया इस खिलाड़ी ने, बहुत ही अच्छा कार्य किया। और चेस में आप कहते हैं ना कि सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, प्यादा होता है, और वही प्यादा जब आपके विरुद्ध आपके खेमे में जाकर पहुंच जाए तो वो किसी को भी जिंदा करा सकता है। अब देखिए ऑल आउट की परिस्थिति नीलगिरी नाइट्स के पास आ चुकी है। क्या नीलगिरी नाइट्स इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर पाएगा? It's a super tackle situation, 3 defenders out there, so it should be easy as Manjeet Mitra has come in for his first ever raid in the match. And it's been a very, very long time ago that we've seen him raid. I think he'll go back empty-handed. That is what it will be sounding like, as Velavan wants to go out there, put in a solitary raid and come back. I think they will play on the super tackle situation now, the Nilgiri Knights. And if that happens, that'd be really nice, as they wanted a substitute raider. Yeah, that is why. That is why. They wanted a substitution to happen, and Richpal Jat comes in as Gopal Singh goes out. Raider for a raider. Right. आई थिंक शायद वहां पर गोपाल सिंह इतने बेहतर उनके स्टेट्स नहीं रहे डू और डाई रेड में, और रिचपाल जाट पहली रेड है, फ्रेश लेग जरूर होंगे, हालांकि मुकाबला ही बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा रेड्स लगाई नहीं किसी ने भी। रिचपाल जाट देखते हैं कि किसकी तरफ वहां पर अटैक करने जाएंगे नवीन, क्या यहां अटैक करने जा सकते हैं नंबर 66 जर्सी पर, क्योंकि वेलवन जब वहां से आएंगे तो एक मौका हो सकेगा। Yeah, as the Polani Tuskers watch it with keen eyes, whoever he goes to attack on, and that was almost an escape for Richpal Jat. My God, Super tackle. they fumbled Super on the Nilgiri tackle. Knights. Oh, Velavan saved it at the last minute. एक दफा लगा था, देखिएगा नवीन यहाँ पर फॉलो करते हुए आए थे, क्या ओवररन न कर जाए, बट मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। जैसे वेलेवन को आते हुए देखा, नंबर 66 यानी कि मणिकंदन उन पर डाइव लगाई, और यहाँ आखिरकार जो आप कहते हैं ना कि फाइनल नेल इन द कफिन की जगह वो फाइनल फूल जो था उस टैकल में कहीं ना कहीं गार्लैंड डाला गया। यहाँ अनुज सैनी और वही लोकेश गोसलिया का कॉम्बिनेशन, मुझे फिर से देखना है नवीन कि लोकेश गोसलिया किस पायदान पर थे, क्या इन पर थे? I don't think so. He was in the inn. I think he was there in the corner itself. But Anuj Seni, marvelous. He was in the corner as well. At this point, we'll go to Lokesh Gosalia. Even though Anuj Seni came from behind, sorry, Lokesh Gosalia will get it. And I think he's almost getting in. I think he should be now, what, 96? Yeah, I think. Yeah, I think, because one super tackle already. We will ask our co-producer Mohit also to confirm the same. Anuj Seni did very well, but that point will go to Lokesh Gosalia.
As Rohit Yadav once again comes in a do-or-die raid situation. Is it? No, it's a super tackle on situation. So Periyar Panthers winning the toss will get the first option to raid as well in the second half. And Velavan, he wants to inflict the do-or-die raid. He says, come on Anucheni, come against us. We will have you covered. No, the official scoring says 3 points. So it's just one super tackle and one tackle as the half has been concluded. What a thrilling eliminator number 4 we are watching here. And this is just the beginning, I should say. And we will go out there for that break just to confirm 14-12. Ashit, 7 tackle points for the Periyar Panthers. Can you believe this? How did this happen? And for the Nilgiri Knights, only 3 as of now. So out of 7 tackle points, Lokesh Gosalia has got, just 3 out of it. All right, that's interesting. Let's slip into that short break and come back soon to see the Periyar Panthers raiding first in the second half as they have won the toss. और पिछले वहां पर क्रम में अपनी दोनों ही टीमें अपने अंदाज में खेल के साथ प्रभावित करते हुए नजर आई हैं। आप सभी को बच्ची एलिमिनेटर नंबर 4 है। आप सभी मत भूल जाइएगा, ये वर्चुअल सो कॉल सेमीफाइनल है। जो इस मुकाबले को जीतेगा फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा पलनी टस्कर्स के विरुद्ध। और पहला हाफ किस तरह से बीता है, किस प्रकार से व्यतीत हुआ है, ये हाईलाइट्स आप सभी के समक्ष है। नीलगिरी नाइट्स ज्यादा रेड में आपको प्रभावित करते हुए नजर आए, जहां सुंदर विश्वकन्नन को 4 रेड पॉइंट्स मिले, के हरीश को 2, एस मरीबसु सेल्वम को 2 पॉइंट्स, मणिकंदन निसामनी के खाते में नवीन 3 टैकल पॉइंट्स गए हैं और इकलौते डिफेंडर रहे जिन्होंने डिफेंस में पॉइंट प्राप्त किए हैं। अब देखते हैं कि क्या पेरियार पैंथर्स के 7 डिफेंस पॉइंट्स और आगे बढ़ेंगे, रेड पॉइंट्स कैसे एकत्रित होंगे। नवीन, ये मुकाबला ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बन चुका है। And this is what we wanted to see in the morning from the Chambal Challengers, isn't it? Against the Nilgiri Knights. Whoever wins or whoever loses, we want to see a big fight that has been put up. That is what we really want to see. But yeah, from the time Lokesh Gosalia has been retrieved back on the mat, this is a good beginning. Right, as we will head into this, just a 2-point lead for the Periyar Panthers, and they will have the first option to raid first against a 3 defense format. It's a super tackle which is on 3 proper defenders, Manigandan Suralamani, and of course, no, that's Nesamani and Santosh Srinivasan and Velavan Muruganandan. Now this is interesting, where Manjit, I think, should go back probably just one more raid and ask Velavan to come in. And the problem, oh my God, Velavan! He knows what a big blunder he's committed. बहुत बड़ी मिस्टेक। और जो बॉर्डर लाइन की आप बात करते हैं, बॉर्डर लाइन छोड़िए, बहुत ज्यादा आगे उस बॉर्डर लाइन पर आपने हमला किया था रेडर पर। मंजीत का कोई इरादा नहीं था वहां पॉइंट लेने का, ये तोहफा दिया है और गिव अवे पॉइंट देखिएगा नवीन बहुत ज्यादा आगे से पहले बॉक लाइन पर थे और कितना दूर से जंप लगाई थी, ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग पूल में वहां डाइव लगा रहे हो। बट ये गलती वेलेवन को भी तुरंत समझ आई। नदी में मछली बह के चली गई, समझ आने की क्या फायदा। That's what it happens where the fish is already flown off. अच्छा लगा नवीन जिस प्रकार से अनुराग पछता होत के जब चिड़िया चुकी खेत और अब पछता होत क्या जब नदी में डूब चुकी है कुछ। Arvind Rajveer, he came in as a super substitute. Lokesh Gosalia said, why did you go? He's just warning Manjit Mitra. Did I ask you to go for the tackle? Oh, just 1 point though. मंजीत मित्रा थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव खेले और बहुत ही अच्छा कार्य किया। अरविंद राज, इनके बारे में हमने बात ही की थी ना, कोच ने भी कहा था कि ये भी पूरी तरह तैयार है खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा इवेल्युएट किया। अच्छा मौका था पेरियार पैंथर्स के पास यहाँ ऑल आउट करने का। और लोकेश गोसलिया देखिए किस प्रकार से डाटा नवीन, और इसीलिए कप्तान बहुत ही प्रभावित कर रहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी टीम को लीड करा रहा है, क्योंकि जहां गलती होती है वहां शायद स्कॉल्ड करना भी बेहद जरूरी होता है। लोकेश गोसलिया पहली बार इस मैच में लोकेश Kusalia ho gaya, matlab, that is what it looked like. He was really angry with whatever Manjit Mitra did. But now, Arvind Rajveer, he knows it's just a 2-pointer deficit. And he will need to go out there and don't go too deep inside because there is no bonus. And if that is the case, it'll be a do-or-die raid
that will be coming in for them first and only try out in a do-or-die raid and try and play on the super tackle situation. That is what they will try and do. And Anuj Saini again also will try to inflict the do-or-die raid. तो अनुज सैनी एक बार फिर से आए 3 के हाउस में। ये हाथ क्या चक्री नवीन, आई थिंक शिवाजी द बॉस में जिस प्रकार से वो हेलीकॉप्टर हाथ से घुमाने का प्रयास करते हैं रजनीकांत साउथ के और पूरे भारत विश्व भर के बहुत बड़े सुपरस्टार, हम फिर से रिप्ले में क्या देख पाएंगे अनुज सैनी को? कुछ नया हर बार अनुज सैनी लेकर आते हैं नवीन। What was he trying to mix? Come on Anuj Saini. आई थिंक यू वांट कि रेत घूमे मैं जाऊं अंदर। Yeah, और कुछ आटा गूंद रहे थे। I don't know what was he trying to do. He was trying to mix some wheat flour or what. I mean, he was just trying to get ready for dinner. No, Anuj Saini, come on. But yeah, that looked nice. That really looked nice. He was, I think, trying to distract the defender, maybe. But yeah, that's a good strategy. But Rohit Yadav now in a do-or-die raid. Super tackle situation on. Who is going to blink first? Nesamani wanted to blink it and change of directions. That is wonderful. Manikandan. Nesamani went for the ankle hold. It's a super tackle. And look at the change of direction that happened from Sudramani. That is a dangerous cover combination of Nesamani and Sudramani. वाओ, जस्ट वाओ नवीन। जरूर थोड़ा सा मणिकंदन निसामनी यहाँ पर इंजर्ड हुए क्योंकि पहले से ऑलरेडी वहां पर कट था, पूरी तरह से उन्होंने बाउंस किया उनके नीज पर। बट ये जो कार्य किया मणिकंदन ने नवीन, अन्यथा रोहित यादव एस्केप करते हुए वहां अपना टैंगलिंग हेड निकालते और वहां पर 3 पॉइंटर 2 पॉइंटर अपनी टीम के लिए ले जाते। बट नवीन, थोड़ी दिन पहले एक प्रश्न आया था आज भी एक्सपर्ट में कि क्या ये दोनों मणिकंदन का वन ऑफ द बेस्ट कवर्स कॉम्बिनेशन है? अनडाउटेडली अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, Totally. And now Marimuthu Selvam is just been revived from the bench into a do-or-die raid. He should be careful with Anuj Saini's double thigh holds. He should be careful with Lokesh Gosalia's ankle holds. So it is twice. Oh my God, he's gone out of the lobby. What a brilliant move from Lokesh Gosalia. He moved inside and behind the in defender. Wow. I've not seen that happen. Watch this. Oh my God. नवीन, इससे पता लगता है कि सभी कबड्डी के खिलाड़ी देखते ही देखते कितनी ज्यादा मैच्योरिटी, कितनी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ कबड्डी यहाँ पर आ चुका है और ये एंटीसिपेशन एट द टॉप नजर आया नवीन। पता लग गया तो लोकेश गोसलिया को कि अब मैं इस किक से बच नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो थोड़ा साइड हुए और बहुत ही बढ़िया पेशेंस, धैर्य बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर होल्ड कर रखा है दोनों ही टीमों ने नवीन। If you really ask me what is that Kabaddi Kamal moment of the entire day, not just a match, is that Lokesh Gosalia will go back that replay once again. And I'll tell you what, Nesamani is already having few stitches on the top of his right eyebrow. And that is why he's feeling that pain because stitches, it can hurt you. I think Arvind Rajveeran will be only going in for an empty raid if I'm not wrong. He might not try too much. But can we go back that replay previous round of how Lokesh Gosalia went behind the in defender? Not this. Not this. I'm sorry. Not this, guys. This is a super tackle. Not this situation. I'm sorry. Something happened there on the mat. Anuj Saini once again. He's confident that he's got a point. And he's still walking around near the midline. 1 point. And he's attacked the raider Arvind Rajveeran. अद्वितीय अनुज, अद्भुत अनुज, क्या बात है। पहले वहां पर 2 पॉइंट रेड में लाए थे जो अपनी टीम को सेव किया था। ये देखिए चेन छोड़ी थी नवीन, चेन जैसे ही छोड़ी अनुज ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन किया और इनके खिलाड़ी पर टच किया। शायद अरविंद यही कह रहे हैं। Yeah, Arvind wanted to go for the ankle hold from the in position, isn't it? That is what he tried. Let's just go around. ஆடுவாங்க கண்டிப்பா. நீங்க ஆடிக்கீங்க. ஏன்னா இங்க பாரு யார் ஒருத்தன் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அஃபென்ஸ் இல்ல. எல்லாமே டிஃபென்ஸ். அது முட்டாள மாதிரி அடிக்க. பரவாயில்லை. நீங்க பரவாயில்லை. And he just said hold the defense tight. And I really want to see that moment once again of Lokesh Gosalia going behind the in defender. I've never seen that. Oh my God. That's just marvelous. Yeah. As Manikandan himself comes into raid, that's good. Yeah. They don't want to get in a raider. और नवीन आपको मैं रोकूं, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैच के कॉन्टेक्स्ट से दूर हम बात कर रहे हैं। बट जब पूरन शेखावत आए, उन्होंने पानी पिया ना नवीन, मुझे पिछले समर एडिशन के पेरियार पैंथर्स के कोच मोहित हुडा साहब याद आ गए। आपको भी जरूर याद होगा कि जब वो आते थे सिर्फ वॉलंटियर से पानी मांगते थे, एक गुट पानी का पीते थे और बाकी खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ समझाते थे। और एक और चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पिछले समर एडिशन के मुकाबलों को, आशीष नरवाल एलिमिनेटर्स में थे, उनके हेड पर भी वहां पर एक बहुत ही बड़ी व्हाइट पट्टी थी। क्या ये व्हाइट पट्टी निश्चितता से जरूरी होती है समर एडिशन में फाइनल तक के सफर को तय करने के लिए? I'll tell you something.
Ashish Narwal is the only man who's made the physio team work overtime. Every part of his body had a bandage. But now, this is interesting as Suralamani has come in for a do-or-die raid. And we saw what he did. Remember, he went in for the back kick. Oh, that was too close. That was very, very close. He tried his best possible escape. Couldn't go out there against the dash. And Lokesh Gosalia doing once again what he does best. जी हाँ, प्रॉपर तरीके से एंगल को कट आउट किया यहाँ पर और अच्छा साथ आया, पर जिस प्रकार से टर्न किया ना नवीन मणिकंदन ने भी, देखिए पूरे अपने हाथ को स्ट्रेच किया, बट अनुज जी कहीं ना कहीं वो फुटबॉल किक की तरह जिस तरह से वहां पर स्वीप करते हुए ले गए उनके हाथ को, वो अच्छा कार्य था। बट अब नीलगिरी नाइट्स नवीन ऑल आउट हो जाएगी। पहले ऑल आउट के पॉइंट्स पेरियार पैंथर्स को मिलेंगे। अब ये लीड बढ़कर थोड़ी सी 6 अंकों की हो जाएगी इस एलिमिनेटर नंबर 4 में। Yeah, totally, but the all out was supposed to be for the Periyar Panthers, isn't it? As Anuj Saini came in and got that review in his favor. But then can we go back to that brilliant Kabaddi moment of the day for me? As the substitutions let it take place, that's okay. As Santosh Srinivasan comes in place of Vasant. So can we see what Lokesh Gosalia actually did in that do-or-die raid? That's very, very interesting. Sundar Vishwa Kannan has come in after the all-in. नवीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीलगिरी के लिए ऑल आउट ठीक है, क्योंकि बहुत देर से अपने रेडर्स को रिवाइव नहीं करा पा रहे थे। 3 डिफेंडर्स के साथ वहां लगातार मौजूद थे। अब सुंदर विश्व कन्नन और पूरी वहां पर साथ आ चुके नीलगिरी नाइट्स की, और इस बार बहुत ही अच्छा फ्लाइंग हैंड टच करने की कोशिश की थी, बट कवर्स ने इस बार अपने आप को पीछे अच्छा घसीटा। Somebody was asking, he end up or means why are you going in so deep? That is what the lip actually read. But yeah, Rohit Yadav, even he is coming after a very, very long time. Yeah, it's been that sort of a defense, isn't it? Where they've not been able to very quickly revive their raiders and the cover defenders standing out there. It's just that walk line footwork that Rohit Yadav has. And Santosh Srinivasan just watches him dance around on the balk line, just asks him to go back. And now, I'll tell you something. Look at Marimuthu Selvam. He's not going near Lokesh Gosalia at all. He just directly goes towards it. And the ankle hold from Monu Prasad. Monu is a defender, Mari, on that left-in position. You need to just play him as a defender. नवीन विथ 5 डिफेंडर एंड 2 रेडर्स, एक बार फिर से वो स्ट्रेटेजी काम करती हुई। देखिए पहले तैयार थे, बैंडेड डाउन थे मोनू प्रसाद, और जैसे ही एस मरीमुथुल ने सिर्फ सिंगल बार ट्राई किया उनके आगे से चुराने का कुछ बोनस, और तुरंत वहां पर एंकल होल्ड पर गए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड की वहां पर ग्रिप थी। मजा आया। लोकेश गोसले को अच्छा साथ मिल रहा है वहां पर मोनू प्रसाद से, और मोनू प्रसाद मुझे एक और पैंथर की याद दिला रहे हैं, अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस। वो दोनों इन पर खेला करते थे और बहुत ही अच्छा कार्य किया करते थे, और वही क्या कार्य मोनू प्रसाद कर पाएंगे। बट यहाँ रोहित यादव मौजूद है, क्या वो थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करेंगे? All right. Wait. They have a hand touch is what they are claiming. And that is not looking right. The whistle came in as 2-3 whistles. As Mohan Gowda will discuss, Sagar Panchal and Akshay Desai, everybody will get into it. Sagar, all right. With his body language, it looks like Rohit Yadav did not have a hand touch on Velavan Muruganandan and looked inside the lobby. Oh my God, this is interesting. जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कार्य चल रहा है। पूरन शेखावत साहब जरूर यहाँ पर उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय देसाई, सागर पंचाल, मोहन गौड़ा, राखी कुमारी वहाँ पर मौजूद हैं। इन चारों ने क्या मिलकर निर्णय लिया है? रेडर आउट, यानी कि रोहित यादव वहाँ पर बाहर जा रहे हैं, और शायद खुद रोहित यादव कह रहे हैं कि रिव्यू लीजिए या ना लीजिए, रोहित यादव ने यहाँ पर कहा है। Yeah, correct, because he knows that he did not have a touch. He very clearly knew it. See, it was a very, very big gap that was there. And Velavan immediately said he went out of the lobby without a hand touch. Yeah. அந்த கான ஜோன் ஆகாத கவர் ஆடு, கவர் போகணும்னு அது வந்தான்னு வச்சுக்கேன், அதே மாதிரி அடிச்சிடலாம். நீ ஒரு தடவை ரைட்ல சி, ஒரு தடவை இங்கே ஃபுல் கோட் ஆடு, கண்டிப்பா முடியும். சந்தோஷமா இரு, ஹோப் பாருங்க, சரியா முடியும். All right, that's what you need from the coach. He's told Marimuthu Selvam that first attack on Lokesh Gosalia, try and attack it, and then go towards the covers. Don't try and go too deep towards Anuj Saini when you're going for the running hand touch. As Sundar Vishwakandan has now come in. Manjit Mitra! He's been giving away points too easily.
जी आज बहुत सारे पॉइंट्स मनजीत ने किए हैं और मन इनके हमेशा अक्सर जीतते हैं यहाँ पर, बट आज थोड़ा सा यहाँ पर सोलो टैकल्स के लिए जा रहे हैं और सुंदर विश्वकर्णन को लगातार यहाँ से एक पॉइंट्स का जरिया रहा है नवीन। Manjeet should have gone for the dash, Harshit. Why was he trying to go for the back hold? Back hold. I mean, side hold. It's not even a back hold. He was going for a side hold. Not needed at all. He should have just dashed him. You know, he could have had a 50-50 chance, as they could have gone in for that review also if that was needed. Yeah, that dash was more needed. And he missed out on that occasion. Now Richpal just has a kick on Velavan. Nothing there. They can afford to waste some time on the clock for the Periyar Panthers. They have that, lead where they can actually sit back and relax and say, let the Raiders of the Nilgiri Knights take all the pressure. Now look at this. Monu Prasad comes in on that left-in position. The moment Sundar Vishwakandan comes in, Monu Prasad is right there. So Sundara should watch out for that. जी हाँ, वहां पर सुंदर विश्वकर्णन पूरी तरह से ध्यान देंगे और इस बार एम्प्टी हैंडेड वहां से वापस भी जाते हुए नजर आएंगे सुंदर विश्वकर्णन। अनुज सैनी इस बार रेड पर। अनुज सैनी देखिए ये हर तरह से रेड लगाना जानते हैं। एक बार फिर से कवर्स के बीच में से जाकर पॉइंट लेने का प्रयास। और नवीन मुझे इनकी सबसे अच्छी स्किल क्या लगती है, दोनों तरफ से रेड लगा सकते हैं। लेफ्ट रेड भी, राइट रेड भी। लेफ्ट रेडर के तौर पर इन्होंने अभी शुरुआत की, फिर राइट रेडर के तौर पर कार्य किया, इसलिए भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं वहां पर डिफेंस के मध्य। Anuj Seni you're talking about. So you decided that he's an all-rounder. Oh my God, I was thinking, who were you talking about? Right, Arshid, that was just a weak Humpy Heroes' defense. Right, no, he's good, he's very good. I'm not saying he's not an all-rounder. He's there, he's all. He needs to round up more nicely. He needs more experience. He needs more stuff to happen. अभी तो सिर्फ शुरुआत है। डू और डाई रेड देखते हैं कि किस प्रकार से अब आगे की पड़ेगी। रिचपाल जाट को लगातार इनके कंधों पर जिम्मेदारी मिली है डू और डाई रेड का। क्या इस बार कारनामा कुछ कर पाएंगे? स्लिप हुए थे, डिफेंस ने अपने आप को होल्ड ऑन करके रखा। 7 सेकंड से कम का समय शेष बचा है और शायद अब कोई गलती नीलगिरी का डिफेंस नहीं करेगा। चेन में नहीं गए थे, पर उसके बावजूद पूरा कॉम्बिनेशन नीलगिरी नाइट्स का नजर आया नवीन। Again outside the back line, looked a dangerous tackle for me. It had Richpal Jad all the options to go out there. Now, when you're standing in the cover position with the chain, why do you have to break your chain? And look at that right corner, Santosh Srinivasan coming in as a second line of defense. And now in a do-or-die raid is Sundar Vishwakandan trying his kick on Anuj Seni. Lokesh Gosalia, is he good in those blocks as well? We've seen everything from Lokesh Gosalia. Can he come across? No, he's not good in the blocks is what I feel. He's the day dashed out. 1 point, Nilgiri. Oh, yes. That's number 9 out. My God. He's not good in the blocks, Harshit. That's a bit of a weakness for our captain. जी और बहुत ही अच्छा एंटी ब्लॉक भी किया सुंदर विश्वकर्णन ने। बहुत अच्छा एंटी ब्लॉक किया, अच्छी तरह से बचाया। और पूरन शेखावत साहब भी नाखुश थे क्योंकि डू और डाई रेड का मौका था यहाँ पर सुंदर विश्व के पास। उन्हें ज्यादा एफर्ट्स वहां लगाने थे। यहाँ जरूर टाइम आउट मांगा गया है नवीन। पूरन शेखावत साहब कहेंगे कि ऑल आउट बचाना बेहद जरूरी। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय आ चुका है नवीन। सेकंड्स भाग नहीं रहे, मिनट भाग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बहुत तेज बढ़ रहे हैं। बेटा और बोनस हो जाए तो 12 बार ट्राई करना, उस एडवांस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है यार। लोकेश Oh, he's thinking where is सुने Lokesh अनुज Gosalia. ओए பேசி ஆடு நிப்பாடி ஒன்றும் பாயிண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சந்தோஷ் மிஸ்டேக் பண்ணிடாத. சரி நீ ஆடு, நீ வித்து செயினோட அடி. இப்போ செயின் விட்டு அடிச்ச எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் பார்த்தியா? அது தேவையில்லை. வித்து செயினோட அடிச்சுன்னா ஈஸி, அழகாக தூக்கிட்டு வந்திருப்பான். செயின் விட்டு அடிக்காத. அங்கே நீ கார்னர் ஜோனில் அடிக்க ஜஸ்டா பண்ணலாம். உள்ள ஒன்று கட்டிங்லாம் வித்து செயினாக இருக்கணும். மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாங்க. 110% what I told. Raja Ram is telling the cover defenders the same point. You did not go with the chain against Richpal Jha. That was a dangerous tackle. Nee chain vittu adicha. Adala da patiya evlo risk aidichi. That is what he asked. My God. And I don't have any psychological connections with Raja Ram as of now. Only Kabaddi mat is the connection. Now Gopal Singh has come in. Harshit, Yeah. do you want to talk aage ka rasta for Periyar Panthers or Nilgiri Knights? Because it's gone either ways. जी हाँ, कभी भी मुकाबला पलट रहा है नवीन, क्योंकि ये गोपाल सिंह को अंदर बुलाया गया है। रिचपाल को पहले इनकी जगह पर भेजाया गया था अंदर की तरफ। एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 6.5 मिनट से कम का समय शेष बचा है। 19-22 का यहाँ पर स्कोर है। 3 मिनट की लीड और 3 पॉइंट्स की लीड क्षमा की जगह पेरियार पैंथर्स के पास है। अनुज सैनी एक बार फिर से रेड पर है एज ए लेफ्ट रेडर शुरुआत करते हुए। अभी तक एम्प्टी हैंडेड वहां पर गए हैं। देखते हैं कि क्या कुछ प्रयास करेंगे यहाँ पर। सिर्फ 3 का हाउस था नवीन पेरियार पैंथर्स के पास। Good that Anuj Seni actually went back without being a hero
there. And Mari knows that it is going to be a do-or-die raid for the Periyar Panthers. As Gopal Singh now goes in. And this is interesting because Velavan in that left corner, as Rajaram, the coach, said, no making mistakes. Again! Save error! They broke the chain! They broke the chain! That is a big error for giving away 2 points. Rajaram just told the Manikandan combination to not break the chain. They broke the chain. जी यहाँ पर क्या काउंटर एक्शन स्किल्स यहाँ पर नजर आई गोपाल सिंह की, बहुत ही जीनियसली। और जो राजाराम साहब ने कहा था कि चेन तोड़कर नहीं जाना है, चेन वहां पर तोड़ी। और गोपाल सिंह की नवीन काउंटर एक्शन स्किल्स की हमेशा बात करते हैं, बहुत ही डिसेप्टिव रेडर है, परफेक्ट डुबकी नवीन। ग्रीन कार्ड जर्सी पुलिंग, नो जर्सी पुलिंग। पेरियार पैंथर्स कोच प्लीज कम। क्या मणिकंदन का टच ही नहीं हुआ नवीन? अजय जर्सी पुलिंग प्लीज कम। मैं सोचूं कि अगर वो मैट पर मौजूद है और पूरन शेखावत साहब को भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिला है। ग्रीन कार्ड, डिस्टर्ब द गेम। All right. Next season for sure, Kabaddi Spirit Award. Even for the coach, if you get a green card, you're going to lose points on that. And it's a do-or-die raid to rub insult to injury here. The Nilgiri Knights have got a do-or-die raid after that unwanted chain break tackle. Running hand touch as he got on Monu. No, he's not. Sundar Vishwakandan, this is a good opportunity here because Lokesh Gosalia is not around. 9 seconds, 8 seconds. I think Sundar Vishwakandan gave up. He gave up. He was tired. 1 point Periyar Panthers. लेफ्ट फ्लैंक पर अटैक कर सकते थे क्योंकि वहां पर लोकेश गोसले नहीं मौजूद थे और परमानेंट लेफ्ट कॉर्नर कोई वहां पर नहीं मौजूद था। सुंदर विश्वकर्णन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुक गए। नवीन देखिए, दोनों एंकल्स कहीं ना कहीं अनुज सैनी की गिरफ्त में उन्होंने दिए और अनुज सैनी ने अब बताया कि वो डिफेंडर भी है, अपने क्लचेस में फंसाए सुंदर विश्वकर्णन को। 25-19 नवीन, 4.5 मिनट से कम का समय शेष बचा है। पेरियार पैंथर्स शायद अब ये टाइम को किल करना अफोर्ड कर सकती है। No, they can afford to do that from the last 4 minutes of the match. And running hand touch. Santosh Srinivasan was having an error in his footwork. 1 point Periyar Panthers. As number 88 out. Now, Lokesh Gosalia has revived. What a right time for him to be revived. ऑल्सो नवीन ने ये हैंड टच बहुत अच्छा था, पर पूरन शेखावत साहब क्या अपने रीडर्स को रोटेट कर रहे हैं। नवीन, पहले गोपाल सिंह बाहर गए, रिचपाल अंदर आए, रोहित यादव बाहर गए, गोपाल सिंह अंदर आए और अब राहुल चौधरी अंदर आ रहे हैं। गोपाल को वापस बाहर बुलाए कि गोपाल अभी आपका कार्य हो चुका है, ज्यादा अब हमें डिफेंडर चाहिए। Yeah, very good thinking. Really good thinking from Puran. And as Marimuthu comes in, he needs touch points. He goes for his trademark kicks. Anuj Saini escapes, challenges him, goes towards Lokesh Gosalia. Anuj Saini, wanted Anuj! Come on, Lokesh Gosalia gave the signal to Anuj Saini to go for the tackle. And Mari just escaping that at the right time. It's still not over this. या मारी मुथु सेल्वा में कैसे खिलाड़ी है नवीन, पिछले जब मैचेस नीलगिरी नाइट जीता है, इन्होंने एक ऐसी सुपर रेड लगाई है जो इनके लिए मैच जिता देने वाली सुपर रेड रही है। अनुज सैनी जरूर दोनों थाइस पर वहां पर जाना चाहते थे, पर वो बॉर्डर लाइन பாயிண்ட் நீ கண்டிப்பா போன ஸ்ட்ரைக் பண்ணு, பேக் பண்ணு, அடிச்சானே வந்துரு. யாருக்கு உள்ள போடா அடா சரியா. இப்போ ஒரு ரைடு ஆடிக்கலாம். இந்த ரைடு பாத்துக்க, உள்ள வந்தா நான் உள்ள வர மாட்டேன். அவன் லைன் ஏறிட்டு கீழ தான் ஆடுவான், லைன் ஏறிட்டு கீழ ஆடுவான். நீ ரைடு எவ்ரி ரைடு ஆடிரு. Okay, so he says the raider is going to waste time. Line eri ulla varmata. That means he will not come deeper inside the balk line. That is what he's told. It's very clear. Yeah, he crosses the balk line, makes the raid legal, and then he wants every raider to go out there and get points. But look at this. Richpal Jat, in the blink of an eye, goes for a lovely kick and gets it on Velavan. नवीन, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, जब हमें दोनों रेड्स में लगा कि रिचपाल जाट जो है ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे और लोकेश गोसरिया जैसे पीछे गए थे वैसे ही वहां पर वेलेवन नहीं जा पाए, बहुत ज्यादा पीछे चले गए थे और रिचपाल जाट जानते थे कि राइट कॉर्नर कहां खड़ा था। नवीन, बहुत ही बड़ा मौका उनके पास था। Yeah, totally. Lovely ankle hold. Lokesh Gosalia is getting closer and closer to that 100 tackle points. Even without this ankle hold, can we go to that Lokesh Gosalia brilliance? That's okay. This is a solitary replay, guys. This is fine. This is not worth to be seen on a replay again. That's fine. Can we see that Lokesh Gosalia going behind the in-defender? That is more worth to be seen again and again as a Kabaddi skill, as Rohit Yadav will kill all that 30 seconds that has been left in this raid. Probably
because Nesamani is just that one defender. You will go back empty-handed. Now, can we get that on the replay at least now? I wonder not. I think we will have to leave that out there. I think... Time out. Periyar fine, Panthers. thank you. Thank you so much at the last of it. This is the most kabaddi brilliant moment I have ever seen from a left corner defender. I have not seen any defender go behind the in defender and stand ஆட out. மாட்டான் அவன் ஆடினாண்ட பார்த்துக்கலாம் ஆடினா ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆடிக்கலாம் ஆறு அடிச்சு இவனையா சரி ஓகே சரி இல்லடா நான் வாசிக்கிறேன் Yeah, there's no point of discussion. It's about Arvind Rajveeran getting touch points. That's it. That is all. 8-point deficit and he can't take a walk in the park. He needs to utilize that strong legs and shoulders of Arvind Rajveeran. He really needs to come out here and become a Veeran of a raid. That's what he has to do. Oh, bonus +1 is it? 1 point. Yeah, Nilgiri Knights. no bonus Question number 5 out. अच्छा, 1 पॉइंट वहां पर मोनू प्रसाद एक बार फिर से शायद एंकल होल्ड की वहां तैयारियां कर रहे थे, बट एंकल होल्ड से जरूर अरविंद राज ने बचाया और शायद ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्या बोनस के लिए जाना चाहिए नवीन, रिव्यू है शायद नीलगिरी नाइट्स के पास, वी विल चेक, बट हाँ जो भी हो अभी यहाँ रिव्यू शायद नहीं लिया गया है। 28-21 3 खिलाड़ी फिर से मौजूद होंगे। रोहित यादव बिल्कुल ज्यादा अंदर नहीं जाने का प्रयास करेंगे और नवीन अब पेरियार पैंथर्स एक पॉइंट पे अगर देता है तो ज्यादा से ज्यादा नीलगिरी नाइट्स के पास 3 रेड ज्यादा से ज्यादा अब आ सकती हैं। Yeah, that is why you need a multiple point rate from Arvind Rajveeran. He needs to go out there, confuse the defense and put out a multiple point rate. That is what is needed. Can Arvind Rajveeran go in and raid like a lifetime of an opportunity that he's got? Now, because this is very, very important. No, he just plants his foot in front of Anuj Saini. That's all. That's all he's been allowed. Again, goes for the kick. Don't step into the lobby. Be careful. That's it over. It's the Raiders of the Nilgiri Knights who have let them down, and now it's almost like the Periyar Panthers are storming into the finals. अनुज सैनी क्या बात है, देखिए ऐसे ही तैयार थे, जानते थे बोनस का प्रयास करने वाले हैं अरविंद राजन, इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल मूव था वहां पर और अनुज सैनी वहां पर तैयार थे, बट नवीन क्या मैच रहा है यहाँ पर। पेरियार पैंथर्स का परफेक्ट स्ट्रेटजीज, परफेक्ट होमवर्क, 2 रेडर्स 5 डिफेंडर्स के साथ खेलने का इनका जरिया एक और बार सही साबित होता हुआ नवीन, और अब थोड़ा सा बदलाव। Yeah, totally. As he wants everybody to use that opportunity to get into the mat for that do-or-die raid on a super tackle. Right, Ashit, I'll tell you what. This is the second time we are watching this as Abhiram has stepped out of the end line. That's the all-out. That's the all-out. That's it over. Velumalai Murthy does not get it. And I think teams now should start to realize one thing, that they'll have to go out there and actually make sure that, you know, how do you play as a team to play 2 matches in a day. We have not seen any team do that. Palani Tuskers in the Puducherry leg, they had to play 2 matches in a day because they had to play 1 in the morning and 1 in the evening for the finals. They lost the finals. And if you remember, Nanded Chambal Challengers of Nilesh's team, remember? In Pune, they also had to play 2 matches in a day. They are, you know, they lost it and they got eliminated. Here, Nilgiri Knights, they won 1 match in the morning. Second match, they'll have to now realize how to win 2 matches in a day. And that was a very good time as well. From morning 10:30 to now at 8 p.m. or 7:30. That's a very long time. So I think that is where the teams need to really understand about the strategy, as the Periyar Panthers will go through to the finals and meet the Palani Tuskers in the finals on the 19th of July. जी हाँ नवीन, छोटे छोटे बवंडरों से ये तूफान नहीं उठ पाएगा, यूं ही सैलाब लिए जब कोई आएगा तूफान भी उठेगा और सैलाब भी बनेगा। क्या खेले हैं आज पेरियार पैंथर्स, वो जज्बा, लोकेश की निगाहों में वो कार्य, पूरन शेखावत साहब के चेहरे पर वो मुस्कुराहट, मोनू प्रसाद का शानदार प्रदर्शन, लोकेश गुसलिया की आज पुनः हाई फाई, और ये मैच पेरियार पैंथर्स ने जीता है। पिछले एडिशन के विजेता डिफेंडिंग चैंपियंस पेरियार पैंथर्स ने नीलगिरी नाइट्स को पटकनी दी है। नीलगिरी नाइट्स एलिमिनेटर्स में लगातार जीतकर यहां तक पहुंचा, वर्चुअल सेमीफाइनल में आकर मुझे लगता है एक एम्पल परफॉर्मेंस के बाद हार मिली। This was a very, very good fight, that is for sure, no doubt at all for the Nilgiri Knights, but the only problem was where, you know, their raiders actually did not
go out there and get any rate points when it was needed. And that all out where Periyar Panthers actually survived, that was a big problem. That was a big problem where it was not there on the all out, right? As that is what has been needed. जी हाँ नवीन, बिल्कुल आपने वहां पर सही कहा। निश्चित तौर पर एक बहुत ही अद्भुत ये मुकाबला था और दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छे अंदाज में खेली। और नवीन, फिर भी मैं इस मैच को यही मानता हूँ, अनुज सैनी ने जो 2 पॉइंट लाए ना नवीन, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य था। छोड़ दो, अभी वो हो गया डिस्कशन। जी हाँ, पर नवीन वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां से ऑल आउट बचाया वहां पर। मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अभी हो गया, क्योंकि see on a review thing you should not be talking too much, so let's leave it at that. Periyar Panthers gone to the finals, let's all be happy with that, that's okay. या अनडाउटेडली वहां पर पेरियार पैंथर्स आज अच्छा खेले। नीलगिरी नाइट्स बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन के साथ आए हैं और बहुत ही अच्छा डिफेंस आज लोकेश का रहा। सुंदर विश्वकर्णन ने अपना पूरा प्रयास किया और बहुत ही टेक्निक कॉम्बिनेशन आज कवर्स का हमें देखने को मिल रहा था। तो ये मैच बहुत ही अच्छे से फ्रेम अप हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ही टीमें खेली और आज कबड्डी की एक बार फिर से पुनः बड़ी जीत हुई है। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन को मिल चुके उनके टॉप 2 फाइनलिस्ट। एक तरफ होंगे पेरियार पैंथर्स, दूसरी तरफ होंगे पलानी टस्कर्स। Totally. And as I said, it's the 2-match strategy. The teams should realize how to win it. It is the format of the series. They can't go out there and complain anything about that. And it is that very important moment that they'll have to realize how to get out of it. 2 all-outs. That is the big difference. And once again, the defense not working out well for the Nilgiri Knights, going out there and giving away all those extra points. And look at this, 12 tackle points for the Periyar Panthers, where they stopped Sundar Vishwakandan, where they stopped Marimuthu Selvam, and it was that Monu Prasad coming in as a 4th defender on the mat with 2 raiders. That is what was a big victory here for the Periyar Panthers. That's wonderfully done. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन मोनू प्रसाद की आज फिर से स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा कार्य किया। बट सुंदर विश्वकर्णन 12 रेड्स आज लगाई, 7 रेड पॉइंट्स मिले। पहला हाफ इनके लिए बहुत अच्छा रहा, दूसरे हाफ में ज्यादा रेड पॉइंट्स इस खिलाड़ी को दिया नहीं पेरियार पैंथर्स के डिफेंस ने। Brilliant, totally brilliant work as well. And where is Lokesh Gosalia? Oh, only 5. We need to wait for the finals for him to get to the 100 tackle points. I'm sure he will very easily do that in the finals, and I'm really happy for Lokesh Gosalia as he will be getting another chance. 5 tackle points today out of the 7 tackles attempted. Brilliant work. As we will slip into a short break and come back soon, as tomorrow we will have the finals at 8 p.m. of the Palani Tuskers and Periyar Panthers. After the break, we will have the post-match award ceremony.
इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के और एक कदम हम नजदीक जा चुके हैं। आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमिनेटर नंबर 4 सो कॉल्ड वर्चुअल सेमीफाइनल ऑफ दिस युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। और जैसा ये सेमीफाइनल की हमें उम्मीद थी, तत्पश्चात वैसा ही सेमीफाइनल हमारे कदमों के नीचे और साथ ही साथ कदमों के थिरकन के साथ कबड्डी का ये निरुपम खेल नजर आया है। आइए इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं मिस्टर नीरज सिंह सर, हेड शेफ जिंजर होटल, एंड दुष्यंत शेट्टी सर, मैनेजर ऑफ जिंजर होटल। हम आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर इन दिस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये मुकाबला दोनों टीमें चंबल चैलेंजर्स के किले को ध्वस्त करके आ रही थी, बट पेरियार पैंथर्स प्रॉपर होमवर्क के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को उन्होंने इनिशिएट किया और प्रॉपर अंदाज में नीलगिरी के विरुद्ध एग्जीक्यूट किया और इस मुकाबले को जीता 35-22 के साथ और बने हैं इस मुकाबले के पश्चात यहां दूसरी फाइनल इस युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन की। आइए बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की। शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट विनर ऑफ द मैच के साथ, जिन्होंने बहुत ही एफर्वेसेंट परफॉर्मेंस आज अपनी टीम के लिए कर दिखलाया है। वो है नीलगिरी नाइट्स के सुंदर विश्व कन्नन। फिर से आज उनका जादू चला है और 7 रेड पॉइंट्स उन्होंने आज अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। तारीफ करेंगे इनके प्रदर्शन की। और आइए सीधा ले चलेंगे आप सभी को बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ, जो रहेंगे पेरियार पैंथर्स के, जिनके सुप्रीम परफॉर्मेंस की सुप्रीमेसी लगातार यहां पर जारी है। लोकेश गुसलिया आज भी बनाया शानदार हाई फाई, बट उस हाई फाई के साथ साथ इतना इंपैक्टफुल और इफेक्टिव प्रदर्शन निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत था। And now the time for the कबड्डी कमाल ऑफ द मैच। और बड़ा मुश्किल था हम सभी के लिए, क्योंकि पूरा मुकाबला निश्चित तौर पर एक डेडली बैटल, नेक टू नेक बैटल के दौरान नजर आया। और पूरे इस मुकाबले में कमाल के पश्चात भी अगर सबसे कमाल मूवमेंट्स नजर आए तो वो लगाया था पेरियार पैंथर्स से एक ऐसे खिलाड़ी ने जिन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया और परफेक्ट के साथ परफेक्शनिस्ट डुबकी का मंजर बनाया। वो थे गोपाल सिंह। पर क्या अद्भुत ये मैच, अद्वितीय मुकाबला। निश्चित तौर पर बहुत ही रिलेंटलेसली दोनों ही टीमों ने अपने रिडेंसियस परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड किया, बट कहते हैं ना, अ परफेक्ट टाइम टू राइट था पेरियार पैंथर्स के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। और जिस प्रकार से समय पर कार्य कर बनी है ये दो टीमें, पलनी टस्कर्स के साथ पेरियार पैंथर्स, जिन्होंने बनाई है फाइनल में अपनी जगह, तो हम पूरी तरह से इंतजार करेंगे उस फाइनल पर मुकाबले की। बट एक टीम का निश्चित तौर पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, जिन्होंने कई सारे अप एंड डाउन देखे इस पूरे एडिशन के दौरान, बट जिन्होंने हमेशा सीखा तो उभरना सीखा था, वो था नीलगिरी नाइट्स का परफेक्शन परफॉर्मेंस के साथ। तो आइए इस एक्सेंचुएट करते हैं इस परफॉर्मेंस को, और उन्हें जाएगा इस समर एडिशन का ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि तीसरे पायदान पर करेंगे वो समाप्त। आइए अब हम समय है हर एक खिलाड़ी को इंडिविजुअली फेलिसिटेट करने का, तो मैं वन बाय वन सभी टीम मेंबर्स को यहां करूंगा इनवाइट कि आपका ये गेस्चर, आपका ये प्यार स्वीकार कीजिएगा युवा कबड्डी सीरीज के समक्ष। तो सबसे पहला नाम इस क्रम में होगा विलवन मुरुगनंथन, जिन्होंने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं जीती है इन सभी द्रविडियन और साथ ही साथ पूरे भारतीय क्रम की तरफ से।
शायद एक परफेक्ट लेफ्ट कॉर्नर के रूप में नजर आए खिलाड़ी। और अगले नाम की तरफ चले तो वो होंगे के हरीश। एक और बार शानदार, इनका नाम इस पूरे समर एडिशन में रॉकेट हरीश के नाम से जाना जाता है। और जब इनके पास लॉन्च पैड होता है, युवा कबड्डी सीरीज ने उन्हें वो लॉन्च पैड दिया कि जाइए और रिलीज कीजिए अपना शानदार प्रदर्शन। एस मणिकंदन सुदलई मणि, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए, परफेक्ट कवर पोजीशन पर इन्होंने ही मैन की तरह, हल्क की तरह डैशेस कर दिखलाए हैं। अब जिनका जादू चला है लगातार वो थे सुंदर विश्वकर्णन एंड आर्टिलरी मैन, एक ड्राइवर सन जिन्होंने पूरी तरह से नीलगिरी नाइट्स को ड्राइव कराया इस बड़े सेमीफाइनल तक। With the power of triple S, the perfect right corner, S संतोष श्रीनिवासन। और अब बात करेंगे एक और ऐसे डिफेंडर की जिन्होंने जब जब मौका मिला कोच की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, इन्होंने आकर हमेशा अपना 100% दिया, वो थे एस अभी कुमार। लेकर चलेंगे आप सभी को एक और ऐसे रेडर की तरफ जिनकी तबीयत खराब हो या फिर कोई इंजरी हो, हमेशा अपनी टीम के लिए रहते हैं मौजूद, वो थे वसंत मुरुगन। और अब अगला नाम एक नए खिलाड़ी के तौर पर टीम में जुड़े, बट आते ही इन्होंने सभी के दिलों पर राज किया, वो थे जॉर्ज विबिन। जब जब वेलेवन थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म होते, इस खिलाड़ी ने हमेशा कहा कि कोच मैं तैयार हूं, वो थे एलुमलई मूर्ति। अब बात करते हैं एक और ऐसे लेफ्ट रेडर की जिन्हें भी जब जब अवसर मिला इन्होंने पूरी तरह से एनकैश किया, वो थे अरविंद राजवीरन। और वैसे रेडर को मैं बुलाऊंगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है और चर्चा का विषय रहा है ये परफॉर्मेंस कारी, और साथ ही साथ इनके लंबे बाल, वो थे अजय नंदा। और अब हम बात करना चाहेंगे इस खिलाड़ी की जिन्होंने पूरी तरह से 7 मेंबर्स के तौर पर एक साथ प्रदर्शन करने की कोशिश की, वो थे केसवन राजा। जी और अब बुलाना चाहेंगे एक ऐसे मणिकंदन खिलाड़ी को जिन्होंने कवर पर बहुत अच्छा किया, द परफेक्ट प्लेयर फॉर द कॉर्नर, मणिकंदन निजामनी। और जिनके किक बहुत ही डेडली है और बहुत ही परफॉर्मेंस जिनका सब्सटेंशियल है और एम्पल है, वो थे उनके कैप्टन एस मरिमुथु सेल्वम। और अब जिनके चलते लगातार क्रम बहुत ही अच्छी तरह से चला है, वो थे इनके मैनेजर अखिलेश मेसा साहब। और अब चलेंगे हम हमारे उस रिचुअल्स की तरफ जो युवा कबड्डी सीरीज की तरफ से एक केक पर चेरी जिस तरह से दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर विकास गौतम सर को भी निवेदन करना चाहूंगा, द सी ऑफ युवा कबड्डी सीरीज। और मैं सबसे पहले यहाँ पर इन्वाइट करूंगा हमारे कोच राजाराम, बहुत ही शानदार अंदाज में इन्होंने कोचिंग की, और चेक कलेक्ट करने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मरिमुथु सेल्वम भी प्लीज इन्हें ज्वाइन करें। और कोच जो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े हकदार रहे हैं इस नीलगिरी नाइट्स के प्रदर्शन को, एक रिवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस जिन्होंने कर दिखलाया। चैलेंजर राउंड में लगातार हार के पश्चात अपने आप में दिखलाया वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ अनुसंधान कर अपना लाजवाब और A+ गेम का अनुसरण किया है इस नीलगिरी नाइट्स ने। और इस पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, और निश्चित तौर पर इनकी फाइटिंग स्पिरिट, इनकी शानदार डिफेंस और ऑफेंस के मिक्सचर को मिस करेंगे। बट अभी यहां से आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पर समय होगा जहां पर हम आप सभी के साथ कल जुड़ेंगे यहां पर क्रम में। बट इन सभी की टीम फोटोग्राफ की तरफ मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप एक चेक के साथ हमें ज्वाइन करें, टीम मैनेजर्स, टीम कोचेस। और ये कितना सुंदर और कितना शानदार दृश्य है। ओके सो चलिए अभी इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, बट जरूर अब जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ जहां पर इस मैच की और ज्यादा ब्रीफ में बातें की जाएंगी पोस्ट शो में।